اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے DMC حیات ہاسپٹل، احمد ٹورز اینڈ ٹریولز، آرکڈ پرائمری اینڈ ہائی اسکول۔ السلام علیکم ناظرین، ناز ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ بیدر میں پہلی انٹرنیشنل ایجوکیشن سمٹ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی جانب سے 2 روزہ انٹرنیشنل ایجوکیشن سمٹ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ پروگرام کا آغاز قراءت کلام پاک سے ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر چیئرمین شاہین ادارے جات نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ شاہین ادارے کو قائم ہوئے آج 31 سال مکمل ہوئے۔ 2 روزہ اجلاس کے پہلے سیشن میں مولانا سجاد نعمانی، چیئرمین رحمانی فاؤنڈیشن کے علاوہ ملیشیا اور فلسطین کے ماہر تعلیم نے اجلاس سے خطاب کیا۔ اس پروگرام کے دوسرے اجلاس میں ملک کے مختلف ادارے جات سے آئے ماہر تعلیم نے طلباء و طالبات کو خطاب کیا۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی تعلیمی کے 2 روزہ اجلاس کا آج پہلا دن تھا۔ الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم Big round of applause. Please welcome Dr. Abdul Qadir Sahab for the inaugural words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah हमारे लिए हरियाणी बिजनेस के लिए शाहीन दावेदार के तलबा और तालिबात के लिए एक यकीनन खुशी का मौका है। आज शाहीन शुरू हुए 31 साल हुए, 31 ईयर्स हुए। आज ही के दिन 31 दिसंबर 1989 को शाहीन 17 बच्चों के साथ एक क्लासरूम में शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मुल्क के तकरीबन 8 रियासतों में 45 ब्रांचेस हमारे काम कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले बीदर एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड है। यहाँ पर यकीनन हमको इब्तिदा में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, तरफ का काम होता गया और आज बीदर में तकरीबन 23 रियासतों के स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं। 3,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हॉस्टल में हैं और एक बेहतरीन बात यहाँ शाहीन में यह है कि गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक इत्तला के लिए यहाँ पे वैष्णवी नाम के 72 स्टूडेंट्स हैं। 11th and 12th में मिला के सिर्फ वैष्णवी नाम के 72 स्टूडेंट्स हैं। तकरीबन 47 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से कई स्टूडेंट हैं पूजा नाम के एक साथ। And a very good morning to all my beloved brothers, sisters and friends. First and foremost, I would like to thank the organizing committee for inviting me to share some knowledge and experiences with regards to the contemporary education that is needed by our people locally, regionally, and globally, regardless of race, color, and religion. So I think
uh, I would like to thank the chairman of Shaheen Group of Institutions, Dr. Abdul Qadir, for inviting me. Yesterday I was in Bangalore officiating one of our affiliate schools that has been in the market for the past 7 years using the integrated holistic education system. So Alhamdulillah, I'm very grateful today. Inshallah, I've been given around 30 minutes, inshallah, to share. And of course, I need some input and contribution from all of you with regards to the contemporary education that is needed by our people right now in India and also throughout the world. Alhamdulillah. So I just want to share a few things with regards to the contemporary needs in our education system right now. Yeah? So as you know, everybody has been talking about Industrial Revolution. Industrial Revolution 1.0, I think you still remember the steam engine. Yeah? 2.0, talking about electricity. 3.0, which is the computer world. But now it's 4.0, talking about digital society, robotics, artificial intelligence, and so on. Yeah? And for your information, 5.0 is on the way. And 6.0, I think, not far from our time right now. Yeah? So if you look into the history of education based on the conventional system that we have been implementing throughout the world, in US, in UK, in the Middle East, in Asia, in South Asia, under the banner of SEMIO, Southeast Asia, of Ministry of Education Organization, we are talking about cognitive psychology, yeah, referring to people like Piaget, Bloom taxonomy, and so on. Yeah? We are talking about behavioral psychology, Ivan Pavlov, Skinner. Then we have the humanistic psychology, people like Ivan Pavlov, Maslow, and so on. Yeah? So all the way we are talking about teacher-centered, student-centered. But from our research, not in Malaysia alone, what I want to share with you is not the model from Malaysia. I'm taking the best practices from all over the world. It is from US, from UK. In fact, we have some model in England where we have been implementing the system. Yeah? So I think we got to move. We got to move from teacher-centered, student-centered. We are not. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers, sisters, dear friends, distinguished guests, Dr. Abdul Qadir, Dr. Maulana Saji Noani, Dr. Hosni Mahmoud from Malaysia. I am very indeed happy to be with you today at this significant event, the International Education Summit. I would like in the beginning to extend my profound thanks and appreciation to the Dr. Abdul Qadir, Chairman of Shaheen Group of Institutions, for inviting me here and for organizing this important
conference, especially in the critical time where is the war crossing with full with hatred, racism, discrimination, wars, terrorism, values and high principles. Also they want the superpower, because they are controlling the world. They want to change the concept of the principle and the high principles which we have studied and we have worked in. In this occasion, तो मैं क्वेश्चन थ्रो करता हूँ और आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। जितने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैम्स होते हैं, वो स्कैम्स क्या बेपढ़े लिखे लोग करते हैं या हाईली क्वालिफाइड लोग करते हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में बना तो उसका स्कैम की जो रिपोर्ट आई वो थी 85 लाख करोड़। क्या आप में से कोई लिख सकता है? एक न एक जीरो में जरूर आप गलती करेंगे। एक प्रोजेक्ट में ये जिन लोगों ने स्कैम किया, क्या वो अनपढ़ लोग थे? जो इलिटरेट लोग चोरी करते थे वो इतना करते थे कि मेरे आपके जेब से पर्स निकाल लेते थे। लेकिन ये जो एजुकेटेड चोर हैं, मुझे चोर का लफ्ज़ जरा इंडिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जो एजुकेटेड डाकू हैं, ये पूरी दुनिया को किस तरह लूट रहे हैं। हमें ज़रूरत है, मेरे काबिल एहतराम हज़रात, वी डेयरली नीड, लकिन्नहुम लैस इंदहुम प्रोफेशनलिज्म ينقصهم كيف يواجهون التحديات المعاصرة. فرجاؤنا رجاء الشعب الهندي المسلم إلى أهالي فلسطين، إلى القيادة الفلسطينية بما فيها قيادة حماس، وبما فيها قيادة الفتح، وبما فيها قيادة الحكومة الوطنية، أن يقودوا الأمة رغم ما هم فيه من آلام. ولكن الله عز وجل أكرمكم بالهمة العالية، هنيئا لكم، أكرمكم الله عز وجل بالهمة العالية وبالشجاعة الفائقة، فتقدمون تضحيات تحير العالم. ولولا هذه الشجاعة، ولولا هذه الجرأة، ولولا هذه الهمة، ولولا هذا الوفاء لما استطعتم أن تواجهوا هذه الهدمات طوال هذه المدة. الشعب المسلم الهندي يشكركم على تشريفكم في هذا المؤتمر، ويرجوكم أن تبلغوا تحياتنا إلى كل رجل وامرأة فلسطينية، إلى أراضي المسجد الأقصى، وارجو الله عز وجل أن يهيئ لنا زيارة المسجد الأقصى بعد أن حرره الله عز وجل من براثن الاحتلال الصهيوني. وشكرا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، مقامی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے عشق و اپنی منزل آسمانوں میں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے اگلے مقرر جناب ایک لمیٹڈ پاور کا اسٹیٹ ہے، فل فلیج اسٹیٹ نہیں ہے. میکسیمم ڈپارٹمنٹ سینٹر کے پاس ہیں، بہت کم ڈپارٹمنٹ دلی گورنمنٹ کے پاس ہیں. لیکن دلی گورنمنٹ کے پاس بھی ایجوکیشن میں بھی جو پرائمری ایجوکیشن وہ ایم سی ڈی کے پاس ہے، اور اتفاقاً ایم سی ڈی بھی دوسری پارٹی کی سرکار ہے وہاں پہ. اور جو ہائر ایجوکیشن ہے دلی یونیورسٹی ہے وہ سینٹر کے پاس ہے، سینٹر میں بھی دوسری سرکار ہے. تو اس موجودہ دلی سرکار کے پاس بہت ہی لمیٹڈ اسکوپ تھا کام کرنے کا، اور اس نے اس لمیٹڈ اسکوپ میں جو کام کر کے دکھایا ہے، جو پوری دنیا میں جس کا ٹھیکہ بج رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو بھی وہ سمجھ لینا چاہیے کہ آخر لمیٹڈ اسکوپ میں بھی حکومتیں کس طرح سے اچھا کام کر سکتی ہیں، تاکہ ہم لوگ جس اسٹیٹ سے آئے ہیں اس
اس اسٹیٹ کی حکومتوں پہ دباؤ بنا سکے اور ان سے بھی وہ اپنی کامیابی کے لیے ایک نظیر پیش کر سکے. یہ چھوٹی سی میں آپ کے سامنے کوشش کرنے جا رہا ہوں. میرا ٹاپک جو مجھے دیا گیا وہ ہے ٹرانسفارمیشن اینڈ ایجوکیشنل ماڈل آف دہلی گورنمنٹ اسکول. وہ آپ سامنے ایک سلائڈ بھی دیکھیں گے, لیکن میں سلائڈ انگریزی میں ہے, میں بولوں گا اردو میں تاکہ اپنی دل کی بات آپ تک پہنچا دوں. سب سے پہلے جو اس حکومت نے جو جہاں سے اس کا ٹرننگ پوائنٹ رہا وہ رہا کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو پریورٹی رکھتے ہوئے اس کا ایجوکیشن بجٹ ڈبل کر دیا. ایجوکیشن پہلی سال میں انہوں نے 25% کا اپنا لکشیہ رکھا تھا, 22.5% کیا پہلی سال میں. اس کے بعد میں اس کو 25 کیا اور 25 سے اور زیادہ کر دیا. تو جب حکومت کے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس بجٹ آ گیا تب انہیں آسانی ہو گئی کام کرنے. اور انہوں نے جو پہلا کام کیا جس میں انہوں نے 54 ماڈل اسکول بنائے, ان 54 ماڈل اسکولس میں سب سے پہلے انہوں نے انفراسٹرکچر کو انہانس کیا. انفراسٹرکچر میں جو ان کے پرانے اسکولس تھے جو بہت ہی بری کنڈیشن میں تھے ان کو انہوں نے ماڈرنائز کیا. ان کے الیکٹریکل سسٹم کو, ان کے فرنیچر کو, ان کے گیجٹس کو, اور اس کے بعد ان کا جو مینجمنٹ تھا خاص طور سے انہوں نے اس کے لیے اس کا نام دیا کہ اس جو مینیجرز انہوں نے ایڈیشنل دیے تاکہ جو پرنسپل اسکول کو مینیج کرنے میں, بلڈنگ کو مینیج کرنے میں جو ضائع ہو رہا تھا وقت اس کا, انہوں نے اس کو بچا لیا. اور اسے بچانے کے ساتھ ایک ایڈیشنل مینیجر دے کے ان سے کہا کہ آپ اس بلڈنگ کی ایکٹیویٹی آپ کریں گے, پرنسپل اور ٹیچرز صرف ایجوکیشن پہ کام دھیان دیں گے. تو پرنسپلز کا اور ٹیچرز کا اور مینجمنٹ میں ٹائم سیو ہو گیا. پہلا کام انہوں نے یہ کیا. دوسرے کام میں انہوں نے مولانا سجاد نذیر, مولانا نیسکو کے لیے مولانا کی جو اہمیت ہے اور نیسکو میں جو مولانا کی قدر ہے وہ شاید ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن یہ مولانا کی دعاؤں کا یہ اثر ہے جو ہم آج یہاں پر آپ کے سامنے کرے ہیں. جناب عبدالقدیر صاحب, چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن, distinguished guests, members of staff, ladies and gentlemen, I am really feeling proud to be here to represent my point of view. And let me tell you that I represent an organization called MESCO, Muslim Educational, Social and Cultural Organization from Hyderabad. We run few schools, colleges, other institutions, which several organizations across the country are doing. I'm not going to talk to you about those. I am here to invite your attention to the most important factor which has to be found out amongst all of us, all the institutions. I am extremely grateful to Dr. Abdul Khadir Sahab, Chairman, Shaheen Group of Institutions, who has made my task so easy, and really I am feeling so happy now to be here that what I wanted to say in my very weak words has been put before you in the highest possible way, the strongest possible way, and the most enlightening way by Hazrat Maulana Sajjad Mamani Sahab. Hazrat, मैं समझता हूँ कि मौलाना ने मेरे काम को इतना आसान कर दिया और शायद मुझे बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रही. और मुझे एहसास हो रहा था कि जनाब अब्दुल खदीर साहब ने उम्मत के एक ऐसे हकीम को यहाँ पर दावत दी है और जो नुस्खा उन्होंने पेश किया है, तो मैं अपने को एक फार्मासिस्ट के हैसियत से इस वक्त तस्वुर कर रहा हूँ. आप यकीन मानिए, जो नुस्खा मौलाना ने आपके सामने पेश किया है, सामने खड़ा, और इसका जो फार्मासिस्ट का जो काम होता है, दवा को ऐसी शक्ल में आपके सामने पेश करे कि आप इसको आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकें और आपके जो उस दवा के मकासद है वो पूरे हो सके. ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मैं कहता हूँ कि रीजन जो
intellectual superiority and moral strength through Quran and Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Next slide, please. Why? Why should we do that? Next slide, please. The community is suffering from serious and severe intellectual deficiency syndrome and moral dysfunction. I think it doesn't take much to agree upon this fact. We are globally suffering. डॉक्टर हसनी मोहम्मद को मोमेंट पेश किया। उसके बाद जनाब डॉक्टर वाइल अल-बताशी को मोमेंट पेश किया। उसके बाद जनाब शिवशरणप्पा वाली सीनियर जर्नलिस्ट स्पीकर को। इसके बाद जनाब कलीमुल हफीज साहब को मोमेंट पेश किया। First announcement is there will be a workshop post-lunch on the topic Singapore Model, 21st Century Teaching and Learning Techniques, which will be conducted by Ms. Nirmala Ayadurya and Jaya Das from EduMatrix, Singapore, in the same program hall, followed by another workshop on the collaborative open online ongoing STEM education. तो होगा। आप सबसे दरखास्त है कि शिरकत फरमाएं। हमारा अगला सेशन ठीक 2:30। I'm very grateful that Shaheen Group of Institution invited me, especially with regards to the present education. So I'm proposing the integrated holistic education system where we focus on the mind, the heart, the soul, the spirit and physical body, but targeting the heart. Because this is the very fundamental element in life when we talk about education. So ultimately we want to produce what we call a holistic human being. And from there, inshallah, we will enhance to be a well-rounded person and finally to develop a balanced human being so that we will excel in this life and also in the hereafter. Because anything which is not balanced, it is against the law of nature. So naturally, it is in line with what our beloved Prophet said, Khairul umur awsatuha. The best that you should perform is balance. So I think we have to look into the system, not only talking about the curriculum, the pedagogy, but transforming and reform education from learning theory to learning practice. So I think ultimately it's not how much you know, it's how much you can educate, but it's how to put it into action. Because the great end of life is not knowledge, but knowledge with action. It is in line with our beloved Prophet said, Laisal imanu bitamani, wala bitakhalli, walakin huwa ma, wa qarra fil qalb, wa saddaqul amal. Iman is not a dream, but Iman is what you believe and immerse in your heart, and finally you have to put into action. Because many people motivate, but they don't activate. And many people visualize, but they do not know how to actualize. So ultimately, integrated holistic education system is the solution, regardless of race, color, cultural and religion. Thank you very much. Assalamu alaikum. My studies, because we have done our research, India is trying to embark on holistic education. That means on total human development. They are no more talking about just intellectual, emotional, spiritual, physical, but we are talking about the mind. About Shaheen School. आज की इस इंटरनेशनल 2 डेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए मैं डॉक्टर कदीर साहब और उनकी पूरी टीम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को मुबारकबाद देता हूं कि बेहतरीन और बहुत ही शानदार कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। लेकिन इसके साथ इस कॉन्फ्रेंस का जो असल मकसद है वो ये कि जो डॉक्टर साहब का जो अज़्म है कि पूरे मुल्क में, पूरी हमारी कम्युनिटी में जो बच्चे भी सलाहियत रखते हैं नीट या IIT के एग्ज़ाम क्रैक करने की,
वो आगे बढ़ कर आएँ। उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। 15 दिसंबर को ऑल ओवर इंडिया में SSG का टेस्ट हो रहा है, उसमें बैठें। उसमें जो लोग भी अच्छे नंबरों से पास करेंगे उनको फ्री इसको सिस्टम है, फ्री, कोई उनकी फ़ीस चार्ज नहीं है। उसके अलावा आपने नॉर्थ इंडिया में जाल फैला दिया है शाहीन का। दिल्ली में एक बहुत ही आला किस्म का सेंटर बनाया है आपने, जो ओखला, जामिया नगर ओखला में है। वहाँ लड़के और लड़कियों के रहने की भी अलग से सहूलत है, और जो फैकल्टी है बहुत ही आला किस्म की है, सारे IITian हैं, और बायोलॉजी पढ़ाने के लिए एम्स दिल्ली से पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, और एक गैर मामूली सेंटर बनाया है आपने। तो मेरी कौम से ये दरख्वास्त है कि अब वक्त आ गया है अपनी नस्ल को बेहतरीन किस्म की एजुकेशन दिलाने का और बड़े से बड़े एग्ज़ाम क्रैक करने का। तो शाहीन की इस ऑफ़र का हम सबको खैर मकदम करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शाहीन के कैंपस में बीदर में 2 रोज़ा इंटरनेशनल एजुकेशनल समिट मुनक़िद किया गया। इसमें 7 ममालिक के एजुकेशनल एक्सपर्ट्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और 10 सेशंस में 35 लेक्चर्स होंगे। और ख़ास तौर पे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नदवी साहब का सुबह में बहुत ही अहम लेक्चर हुआ, जिसका बड़ा अच्छा असर उम्मीद कर रहे हैं कि हम पूरे मुल्क भर में पड़ेगा, तालीम की अहमियत पर और मुल्क के मौजूदा हालात में नस्ल की तैयारी पर। और मौलाना ने बताया, और हमारी शाहीन की ख्वाहिश यह है कि हम एक नस्ल को तैयार करें जो आइंदा आने वाले हालात में 10-20 साल में मुल्क भर के लिए और इंसानियत के लिए मुफीद नस्ल तैयार हो, और साथ ही साथ तरबियत याफ्ता हो, तहज़ीब अखलाक से सरशार हो और काबिल तालीम याफ्ता हो। ऐसी नस्ल बनाएं और नस्ल के ज़रिए तब्दीली लाएं। हॉस्टल्स के ज़रिए तब्दीली, रेसिडेंशियल स्कूल्स के ज़रिए तब्दीली, जो तुर्की का एक बहुत कामयाब तरीन मॉडल है, जिसके अच्छे असरात पूरे मुल्क भर में आए हैं। हिंदुस्तान भर में शाहीन रेसिडेंशियल स्कूल्स के ज़रिए तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है। हमारा मैसेज यही है कि तालीम पर तवज्जो दें, फजूलियात से बचें, और शादियों पे ख़र्च करने के बजाय बच्चों की नस्ल की तालीम पे ख़र्च करें। यकीनन बात सच है कि वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है जो अपनी औलाद को अपनी बच्चों की तालीम से बढ़कर उसकी शादियों पे ख़र्च करती हैं। बड़े बड़े घर बनाने और बड़ी बड़ी शादियों में ख़र्च करने के बजाय नस्ल की तालीम अपनी औलाद के साथ पड़ोसियों के बच्चों की, रिश्तेदारों के बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, और तालीम के ज़रिए ही तब्दीली आ सकती है, और मुसलमान नस्ल को बाअखलाक बनाएं, बुराइयों से बचाएं, मेहनती बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं, और ये नस्ल ताकतवर है तो हमारा मुस्तक़बिल ताकतवर है। ये नस्ल ताकतवर है तो कौम का मुस्तक़बिल ताकतवर है। मैं मोहम्मद अज़ीम क़ुरैशी, और मैं इस इदारे का एक नाता मेरा शाहीन इदारे जा से फर्स्ट स्टार्टिंग से है। जो इस इदारे से मेरी हाफिज़ा बेटी इशरत फ़ातिमा फ़र्स्ट बैच मेडिकल कॉलेज के यहाँ से फ़ारुक़ हुआ, जो MD किए हैं, MS है, और मेरे मकान में 7 बच्चे डॉक्टर्स मेरे ख़ुद के हैं, और 3 दामाद भी डॉक्टर हैं, जिसमें 6 MD हैं। ये सब सहरा मेरे भाई मोहम्मद डॉक्टर अब्दुल क़दीर के साथ जाता है, और मुझे फिर इस इदारे से बहुत कुछ मिला है, और इसकी बदौलत सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमत और उसके सदक़े में मुझे इन नेमतों से नवाजा है, और सब चीज़ अब्दुल क़दीर भाई के बदौलत ही हुआ है। और मुझे इंकरेज किया, और मैं उनकी तवज्जो को कबूल किया, और मेरे बच्चों को बनाने के मैं काबिल बना, और वो बच्चे मुझे अपना रिज़ल्ट दिए, आज बेहतरीन अपने मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। तो मैं ये कहते हुए मैं दुआ करता हूँ भाई अब्दुल क़दीर साहब को, जो मेरे लिए एक बाइज़ रहमत बने हैं। सबसे पहले अल्लाह का करम हुआ, और उसके बाद इनकी रहमतें नाज़िल। दोस्तों, अगरचे आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।